This is Ashish. I welcome all of you to Unacademy CAT YouTube channel for the CAT and it's Q beta Q. Q. Yeah. Sorry. Again, I welcome all of you to Unacademy CAT channel for your CAT and OMITS preparation, guys. This is a series of sessions wherein we are checking best DILR sets. Yes, most of these sets have already featured in actual examination, and I have picked some of the very best sets only to understand what level of questions you are going to face in actual examination. Very nice. The sets that I have picked are very conceptual in nature. Okay, you need proper understanding of the topic to attempt these questions. I gave one such question as homework yesterday. We'll start solving that question today. Prior to that, guys, एक ऑफर है जिसका लास्ट डे है आज. I would like to notify you guys. We are running this offer wherein we are offering discount as well as free months. Okay, अगर आप 6 months का सब्सक्रिप्शन लेते हो 20% discount and 2 months extra. Iconic may be applicable है. The final pricing is 2900 for regular course and 3400 for Iconic course. Very nice. This is the last day. Today is the last day of the offer. Be a part of it. Also, if you are looking to join my official Telegram channel, कुछ बात करनी है, strategy discussion, doubts, कुछ भी, you can reach me out through my official Telegram channel by scanning this QR code. मेरा लिंक जो है ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का वो डिस्क्रिप्शन में भी है, तो यू कैन यूज एनी ऑफ द मेथड्स टू ज्वाइन माय ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल. वहां से आपको और भी फायदे हैं उस चैनल के. जो भी क्लासेस वी कंडक्ट ऑन अनअकैडमी लर्नर ऐप ऑन यूट्यूब विच आर रिलेवेंट फॉर एमबीए, सारे के सारे सेशन आपको उस टेलीग्राम चैनल में मिल जाते हैं. बी अ पार्ट ऑफ इट. नाउ लेट्स जंप टू द क्वेश्चन दैट आई गिव होमवर्क yesterday. Meanwhile, guys, let me see here. Hello, truthful. UK 7 writer. Hello, beta. देखो, this is not a batch. This is practice session. Okay. A batch जो है, as I mentioned, it's in the plan. 3-4 दिन के अंदर लॉन्च हो जाएगा. ठीक है. We are working on it. LR का बैच लॉन्च हो जाएगा 3 से 4 दिन में on YouTube. Don't worry. दिस इज प्रैक्टिस सेशन. देखो, टोटल 15 सेशन हम लोग करने वाले हैं. 15 खत्म होने के पहले पहले आई लॉन्च द बैच. डोंट वरी. Aman Pratap Singh says that I wanted to let you know I have solved more than 200 sets which you described in your 2022 videos and success batch. Once I finish all the sets, I'll reach out to you. Definitely. I'll be more than happy to help. आ जाओ फटाफट एक बार हैशटैग स्टार्ट लिख दो कमेंट बॉक्स में एंड देन विल स्टार्ट डिस्कसिंग द क्वेश्चन. आल्सो इफ यू हैव नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं आपको टाइम नहीं दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, बट आई विल गिव यू 2 minutes ऑफ टाइम जस्ट टू रीड द क्वेश्चन एंड गेट अ हैंग ऑफ इट एंड देन विल स्टार्ट डिस्कसिंग द क्वेश्चन. अगर आपने नहीं भी अटेम्प्ट किया है, लेट्स अटेम्प्ट इट टुगेदर. यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट अप्रोच इज अ प्रॉपर अप्रोच. आपकी हेल्प होगी डेफिनेटली. I'll give you like 2 minutes, only 2 minutes to read this out. Read the entire question. देखो, कैट में ना वन ब्यूटीफुल थिंग इसकी लैंग्वेज भी थोड़ा सा ट्रिकी होता है. कैट DILR is one of the toughest sections of CAT. Yes, it is. For some reason. कैलकुलेशन तो ठीक है, विथ प्रैक्टिस हम लोग कैलकुलेशंस कर लेते हैं, बट लैंग्वेज क्वेश्चन समझ में तो आना चाहिए. You will decode the question statement by statement, word by word, line by line, and we'll solve this question. चलो let's do this. So इस क्वेश्चन में क्या था? There was this study taken place to look at the early learning of rural kids was carried out in a number of villages spanning in 3 states chosen from northeast, west and south. So from this villages were chosen from northeast. एक सर्वे किया था उन्होंने, ठीक है, regarding early learning of rural kids, and the villages they chose, they spanned in 3 regions: northeast, west and south. Okay, northeast, west and south. Very nice. 54-year-old kids, मतलब from each village they considered 50 students, 50 kids.
Okay, 54-year-old kids each were sampled from each of the 150 villages from northeast. So from northeast, how many from northeast? How many villages they considered? 150 villages they considered. It's mentioned in the question. 250 villages from west. 250 villages from west they had considered for the survey, and 200 villages from south. 200 villages from south. 200 villages from south. Okay. Now, and mind it, there were 150 villages considered from northeast, 250 villages considered from west, and 200 villages were considered from south. From each village, 50 kids were considered. So total number of kids were 150 into 50 from northeast, yes or no, which is 7500. From west, it would be 250 into 50 kids from each village. This is close to 12,500. And south, say 200 villages, 50 kids in each village. This was 10,000 students. So total number of students are 30,000. In all, 30,000 students were considered for this survey. Bolo yes sir. Moving ahead with the general data, आगे देखते हैं क्या given है. It was found that of the 30,000 surveyed kids, 55% studied in primary school. Okay, very nice. So of these 30,000 students, 55% studied in primary school. No, 55% studied in primary schools run by government. Okay, 37% were in private school, and remaining 8% did not go to school. So of these 30,000 kids, of these 30,000 kids, government school में there were 55% of the kids. Private school में there were 37. Government school में there were 55% of the kids. Private school में there were 37% of the kids. And others, means those who did not go to school, were the remaining 8%. Of this 30,000. Of this 30,000. Numbers में बात कर लेते हैं. 55,000 of 30,000 is what? 55,000 of 30,000 is what? ये percentages को numbers पे convert कर लेता है. We have the total value. So this is 16,500. 37% of 30,000 is 37 into 3, 111, 11100. And those who did not go to school were 8%. 8 is 24, 2400. Bolo yes sir. 2400 did not go to school. Okay, very nice. So we have this one takeaway यहाँ से. एक तो ये है मेरा. Okay, and दूसरा ये है. Awesome. Further, it is also given that the kids surveyed were further divided into two groups based on whether their mothers dropped out of school before completing primary education or not. अब देखो ये जो 30,000 बच्चे हैं ना, ये जो 30,000 बच्चे हैं, इनको ना दो ग्रुप में बांटा गया. दो ग्रुप में they were further divided into two groups. And what was the criteria of that? Criteria was उनकी मदर्स ने स्कूलिंग करी है या नहीं करी है. I mean, these 30,000 students are divided into two groups. One group was of those students जिनकी मदर्स ने स्कूलिंग करी है, and second group जिनकी मदर्स did not complete school or dropped out. So एक कैटेगरी उन बच्चों की जिनकी मदर्स ने कंप्लीट करी है स्कूल, and second category उन बच्चों की whose mothers were dropped out. I hope you understand. I hope you understand. Bifurcation किस चीज का है. Now यहाँ पर ना इस क्वेश्चन में एक बहुत मेजर फॉल्ट है. एक क्वेश्चन में मेजर फॉल्ट है क्या? कि इस क्वेश्चन में we have 30,000 kids. I'm discussing the fault for the time being. क्वेश्चन में फॉल्ट ऐसा है कि kids given है 30,000.
ओके, अब 30,000 किड्स के लिए मदर्स कितनी है वो गिवन नहीं है। आई मीन हो सकता है ना कि 15,000 मदर्स हो, एक माँ के दो दो बच्चे हो, ठीक है, या एक माँ के तीन तीन बच्चे हो, ये गिवन नहीं है, ठीक है। बट आंसर जो सारे है ना, आंसर आर बेस्ड ऑन द अजम्पशन कि एक बच्चे का एक ही माँ है। इस क्वेश्चन में वो मेंशन होना चाहिए था क्वेश्चन में, विच इज नॉट मेंशन। सो व्हाट वी विल अज्यूम, ये 30,000 किड्स है, ये 30,000 किड्स की 30,000 डिफरेंट डिफरेंट मदर्स, ईच किड हैज वन सेपरेट मदर्स, इंडिविजुअल, कॉमन नहीं है। ओके, वी विल हैव दिस अजम्पशन, ये देना चाहिए था इसमें क्वेश्चन में, दे हैव नॉट गिवन दिस। ओके, क्योंकि आंसर्स आर बेस्ड ऑन दैट assumption only, each kid has a separate mother. Got it? Solve. Now what this table is about, the table below gives the number of kids in different type of schools for mothers who dropped out of the school before completing primary education. ये टेबल उन बच्चों का है whose mothers dropped out वालों का, ड्रॉप्ड आउट, ठीक है। ड्रॉप्ड आउट मदर्स का एक टेबल है, सो इट गिव्स मी एन आइडिया, आपको समझ में आ रहा है, एक और टेबल चाहिए होगा, ठीक है। और इस टेबल में देखो, इस टेबल में इफ यू विल ऑब्जर्व कि टोटल नंबर ऑफ किड्स आर 18,000, बट एक्चुअल में टोटल किड्स आर 30,000, सो 12,000 कहाँ गए, 12,000 वुड कम इन सेकेंड टेबल, यस और नो। सिमिलरली जी में, गवर्नमेंट स्कूल्स में ड्रॉप्ड आउट कैटेगरी में 13,500 स्टूडेंट्स है, 13,500 स्टूडेंट्स है, ठीक है। बट टोटल जी में कितने स्टूडेंट्स है, 16,500, रिमेनिंग 3,000 कहाँ फीचर करेंगे, सेकेंड वाले टेबल में। आई होप यू गाइस डू अंडरस्टैंड। चलो, तो विल नीड अनदर टेबल एज वेल, ठीक है। इस सेम है, फर्स्ट स्लाइड एंड सेकंड स्लाइड सेम है, मैंने केवल ये क्वेश्चन हटा दिया है एंड आई हैव मेड सम स्पेस। जो फर्स्ट टेबल है इज ऑफ ड्रॉप्ड आउट एंड सेकेंड टेबल है दोज हु कंप्लीटेड, ओके। और पीछे का टेक अवे क्या है, और पीछे का टेक अवे है कि जी में यू हैव हाउ मेनी, जी पी एंड ओ, जी में यू हैव 16,500, P में you have 11,100 and O में you have 2,400. Okay, and this is also a takeaway. NEWS, Northeast WS, Northeast में you have 7,500, 7,500. This is 12,500, and this is 10,000. Number of kids. Okay, let's fill the second table as well. ये मेरा G, ये मेरा P, ये मेरा O, this is my total, this is my northeast, this is my W, this is my S, this is my total. This total would be 12,000. Bolo yes sir, this total would be 12,000. Now we can fill these three values. G में total, let this be X, Y, Z. I can write 13,500 plus X is, I can write proudly कि 13,500 plus X is 16,500. Yes or no? G this plus G this would be G total, and G total is 16,500. This will give me X as 3,000. This will give me X as 3,000. Y and Z भी निकाल सकते हैं हम लोग, Y and Z भी निकाल सकते हैं. This is 3,000. Y would be, ये 2,700 है, ठीक है. The total is 11,100. P में total is 11,100. 2,700 is in first table, dropped out वाले टेबल में. Completed वाले टेबल में it would be, माइनस कर दो उसमें से 8,400. बोलो yes sir.
and O total is 1800 plus something which is 2400. This would be 600. Am I clear with this? Yes sir. Also NE का टोटल आपको पता है 7500. 5000 यहाँ पर है. How much would be the value over here? It would be 2500. W total is 12,500. 7300 यहाँ पर है. It would be 5200 over here. Yes or no? 5700 S का टोटल है ड्रॉप्ड आउट के टेबल में. This would be 4300. यहाँ तक समझा तो लिखो हैशटैग समझा. डाउट है तो लिखो हैशटैग डाउट. अगर आपको यहाँ तक समझा है तो लिखो हैशटैग समझा, और डाउट है तो लिखो हैशटैग डाउट. ये टोटल जो गिवन था हैज टू बी डिवाइडेड इनटू टू टेबल्स. फर्स्ट टेबल ड्रॉप्ड आउट मदर्स का, सेकंड टेबल्स ऑफ द मदर्स हु हैव कंप्लीटेड देयर प्राइमरी एजुकेशन. अगर आपको समझा है तो लिखो हैशटैग समझा, डाउट है तो लिखो हैशटैग डाउट. वी हैव डन नथिंग न्यू, नथिंग स्पेशल टिल नाउ. दिस इज व्हाट वी हैव गॉट टिल हियर. फर्स्ट पैराग्राफ रीड आउट करने के बाद दिस इज व्हाट वी हैव गॉट. वेरी नाइस. नाउ yes, give me a thumbs up. Welcome Sonakshi. चलो बढ़िया. Now let's jump to the next part. Let's read out the clues. अच्छा देखो ये सारे मेरे किसी काम के नहीं है. I have taken use of all of these. तो let's make some space. So you know 30,000 बच्चे हैं, 30,000 kids divided into two groups. They are from different areas and they are divided into two groups. Okay. The tables here, this is what we have done till now. Let's read out the first statement. In S, 60% of the surveyed kids were in G. Very nice. अब मुझे करना क्या है? ये टेबल फिल करना है ना, सेकंड वाला टेबल. ओके चलो. S क्या गिवन है? फर्स्ट क्लू हम चेकआउट कर रहे हैं. फर्स्ट क्लू चेकआउट कर रहे हैं. S का टोटल स्ट्रेंथ कितना है बेटा? S का टोटल स्ट्रेंथ है 5700 plus 4300. 10,000. S का टोटल स्ट्रेंथ है 10,000. Now 60% of these kids were in G. तो S के G में कितने बच्चे हैं बेटा? 60% of 10,000 which is 6,000. S के G में 6,000 बच्चे हैं. ओके. Now S के G में 6,000 बच्चे हैं. 5100 are in first table. 5100 are in first table S का G में. So remaining 900 would be in second table. S का G दोनों भी टेबल में है ना. फर्स्ट टेबल में भी है, सेकंड टेबल में भी है. What is G? गवर्नमेंट स्कूल. What is S? एरिया. साउथ में गवर्नमेंट स्कूल में 5100 बच्चे हैं जिनकी मदर्स आर ड्रॉप्ड आउट. रिमेनिंग 900 सेकंड टेबल में आएंगे. Yes. चलो. Moreover in S, all surveyed kids. Very nice. The second part. Moreover in S, all surveyed kids whose mothers had completed the primary education were in school. ठीक है. In S, all the kids whose mother have completed primary education. So we are talking about second table. सेकेंड टेबल में S में all the kids are going to school. मतलब O में 0. What does this mean? Second part. Moreover in S, all surveyed kids whose mothers have completed the primary school. मतलब सेकेंड टेबल में S में all the kids were in school. मतलब O में 0. Those who have completed their primary education is given by second table. उसमें S कैटेगरी में स्कूल सारे बच्चे जा रहे थे, मतलब O was 0, others में 0 थे, which means 3400 would be in private schools. 3400 would be in private schools. Very nice. The first clue has been taken care of. Second first clue has been taken care of. Now let's move to second clue. Oh, okay, very nice. In any,
in any among the O kids, 50% had mothers who had dropped out before the completing primary education. NE में O कैटेगरी में dropped or completed. NE among the O kids 50% dropped मतलब 50% completed. मतलब NEO कैटेगरी में ड्रॉप्ड वालों का काउंट इज इक्वल टू कंप्लीटेड वालों का काउंट. ओके. नॉर्थ ईस्ट एरिया में among others dropped and completed, both of them are 50-50%, मतलब both of them are equal. So NEO dropped का काउंट आपको गिवन है 300. This is given as 300. Check this out. So completed भी 300 होगा. Completed के टेबल में भी NEO will be 300. Completed के टेबल में भी NEO will be 300. बोलो yes sir. So this is 50%. Remaining 50% is here. Okay, so I can calculate this as 300. The vertical sum has to be 600. 300 NEO. तो remaining 300 WO in completed का टेबल. Good afternoon, Yashwendra. Second clue has been taken care of. Now the third clue. The number of kids in G in NE was same as the number of kids in G in W. Okay, let us assume this to be X and Y. Okay, so NEG is equal to NEW. This is what they are saying. NEG is equal to NEW. Number of students in G in NE is same as number of kids in G in W. ठीक है. So NEG कितना हो जाएगा बेटा? NEG दोनों टेबल में है ना, दोनों भी टेबल में है. फर्स्ट टेबल में it would be 4200 plus X. सेकेंड टेबल में it is 4200 plus Y. मतलब X is equal to Y. X is equal to Y. So I can write this thing as X only. Since X is equal to Y, this could be written as X and X. So the vertical sum is 3000. What is the value of X? The value of X would be 2100 divided by 2, which is 1050. 1050 gives me this as 1150. Ayana. Total sum has to be 2500 na, and this is 3850. The entire table is filled. The entire table is filled. Bolo yes sir. Chalo. And yes, now let's attempt the question. First question क्या था छोटू? Let's check this out. First question क्या था? What percentage of the kids from S were studying in P? What percentage of the kids from S were studying in P? Okay. What percentage of kids from S were studying in P? Okay, yeah, studying in P. Very nice. So what is the total number of students studying in S? It is for 5700 plus 4300. 5700 plus 4300. ठीक है. And P में कितने लोग हैं? P में है 300 plus 3400. 300 plus 3400 multiplied by 100. So this is 3700 upon 10,000 multiplied by 100. You get 37%. Answer to the first question was 37%. Yes, Jayant, bolo beta.
Answer to the first question was 37%. Hello, Jayant. Anything to ask, Chotu? So next question. Among the kids in W whose mothers have completed primary education, how many were not in school? So आपको completed वाला table check करना है, completed वाला check करना है, and what you have to answer? W not in school. Completed में W में others आपको check out करना है. Completed में W section में others वालों को count करना है. So second table में W में O के अंडर 300 का वैल्यू है. So correct answer to second question is 300. Correct answer to second question is 300. Very nice, very nice. Okay. Now for 19th and 20th, they have given some additional data, and this is the trend that they are following. They give some general data. वो कुछ general data देते हैं. Based on that, वो 2 या 3 क्वेश्चन देंगे. लास्ट के 1-2 क्वेश्चन के लिए they'll add some more data to it. They'll add some more data to it. So for this, for question number 19, they have added some more data. They've added some more data. Okay. This data has been already taken care of. इसकी कोई बात नहीं. This has been taken care of. ये सेम है. ये रीड आउट करने की जरूरत नहीं है. Just read the additional data. Just read the additional data. So what I have done, मैंने already इधर एक additional data के हिसाब से केवल additional data रखा है. Same question, additional data. So you guys can read it from here, and we'll need the table as well. So I'll fill the table meanwhile. Your dropped out wala. You guys read the question. And I'll fill the data till then. जो हमने solve किया अभी. ये dropped out का table और ये completed का table. Let me fill the values without changing the slide. So yes, this was the table. We solved. I hope meanwhile you might have read the question. Let's attempt it. Now in a follow-up survey, 42, very nice. In the follow-up survey of the same kids 2 years later, it was found that all the kids who were not in school were now in school. Okay, so what they figured out, उन्होंने वापस सर्वे किया and they figured out a very interesting thing. All the kids who were not in school, मतलब all of these kids जो स्कूल में नहीं थे, they took admission to schools, maybe government, maybe private, ये नहीं पता, but they took admission. Not only these, second table में भी every single student who was not going to school started going to school. अगेन गवर्नमेंट में गया, प्राइवेट में गया, वी आर नॉट श्योर ऑफ दैट, बट हाँ ये पूरा वैल्यू है ना, ऑल ऑफ दीज वैल्यूज विल गो टू 0 0 0 0, एवरीथिंग वुड बी 0. ओके, वेरी नाइस. सो इन अदर वर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ. नॉर्थ ईस्ट का टोटल स्ट्रेंथ कितना है ऑफ द स्टूडेंट्स हु डिडंट गो टू स्कूल? O category में it was 600, 300 from the first table, 300 from the second table. West में कितना है बेटा? 1200 plus 300, 1500. South में कितना है गोलू? 300 plus 0, 300.
Okay, all of these students, they enrolled themselves to school. All of these students, they enrolled themselves to some school, and I don't know government hai ya private hai, but they enrolled themselves to some of the school. Very nice. It gives me a minute. All of these students, I'm back now. Chalo, all of these students, they joined the school. मतलब government या private, I don't know, but they joined the school. Fine. Now, further it is given that of the kids who were not in school earlier in one region, 25% were in G now. Very nice. Were the rest enrolled in P. So from one of these three regions, इन तीनों में कोई एक region है. I don't know which region is this. Let us name it region 1. ये जो region 1 है ना, region 1 है, it could be northeast, it could be west, it could be south. कौन सा region है region 1? I don't know. But 25% of the students from this region enrolled in G. Yes, and remaining 75% enrolled in P. I don't know which region is this. Again, it could be any one of the three regions. But 25% of the students from region 1 enrolled in G, 75% enrolled in P. Awesome. Okay. Second region से किसी दूसरे region से all such kids were in G now. मतलब 100%. कोई दूसरा region है, वहां से 100% बच्चे G में ट्रांसफर हो गए, 0% बच्चे P में. और कोई तीसरा रीजन है जहां से 50% ऑफ सच किड्स हैड नाउ जॉइंड D. 50% G में चले गए और 50% P में चले गए. ठीक है. ओवरऑल की बात करोगे तो 50% बच्चे G में चले गए और 50% बच्चे P में चले गए. इट्स मेंशन्ड. As a result, in all the three regions put together, overall मतलब put together, 50% of the kids who were earlier out of the school have joined C. बड़ा इंटरेस्टिंग सा डेटा है, आपको समझना पड़ेगा what they are trying to say. Okay, north east में 600 students were there who were not enrolled anywhere. North east में 600 students were there who were not enrolled anywhere. Okay. वेस्ट में 1500 were there who were not enrolled anywhere. साउथ में 300 students were there who were not enrolled anywhere. अब ये सारे बच्चे ना like they have taken admission to one of the schools, let it be government school, let it be private school, लेकिन उन्होंने एडमिशन ले लिया. Now one of the three regions, किसी एक रीजन के 25% बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में गए, किसी दूसरे रीजन के 100% बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में गए और किसी तीसरे रीजन के 50% बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में गए. दिस इज द डेटा. एंड आफ्टर दिस चेंज what was the number of surveyed kids now in G, in W? After this change, you have to answer the question. Now, how to tackle this question? देखो, जब भी कुछ ऐसा डेटा दिखता है, इस टाइप का जो स्टेटमेंट है ना, इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, ये एवरेजेस में आपने देखा होगा. एवरेजेस एंड एलिगेशन में R1 कौन सा एरिया है पता नहीं. R1 कुड बी एनी, कुड बी W, कुड बी S. R2 कुड बी एनी, कुड बी W, कुड बी S. R3 कुड बी एनी, कुड बी W, कुड बी S. तीनों में कुछ भी हो सकता है. वी आर नॉट श्योर ऑफ which regions they represent, but yes, I can write this statement. कौन सा statement? I can make a statement considering this. आप इसको लेके करो या फिर आप इसको भी लेके कर सकते हो, P को भी लेके कर सकते हो, मतलब any one of these two. ठीक है, any one of these two. What I'm trying to say, मैं G को लेके कर रहा. ठीक है. Can I write कि 25% of R1 means 25 by 100 R1 plus 100% from R2 मतलब R2 plus
और 50% of R3, 50 by 100 of R3 is 50% of overall, मतलब 50% of 50 by 100 of R1 plus R2 plus R3. Can I write this? लिख सकते हैं ना, इट्स गिवन हियर ना कि R1 से 25%, R2 के स्ट्रेंथ का 100%, R3 के स्ट्रेंथ का 50% स्टूडेंट G में ट्रांसफर हो गया एंड G में ओवरऑल 50% स्टूडेंट ट्रांसफर हो गए. सो आई कैन राइट दिस. बोलो यस सर. I can proudly write this. Try to solve this out. Try to solve this out. You will figure out कि ये cancel out हो गया, 50 by 100 R3 and ये 50 by 100 R3 cancel out हो गया. This is cancelled out. Moving further, what I'll get? 25 R1 plus R2 plus R2 is equal to what should I write? 50, 20, so 25 by 100 R1 plus R2 is 50 by 100 R1 plus 50 by 100 R2. I don't have space. आप मुझे R1 by R2 का रेशियो निकाल के बताओ क्या रहा है. R1 by R2 का रेशियो निकाल के बताओ. Like R1 R2 you can figure it out ना from here. What is R1 by R2? R1 वाले को एक तरफ लेकर जाओ, R2 वाले को एक तरफ लेकर जाओ. What is R1 by R2? Give me. Give me this value. What is R1 by R2 from here? Guys, do give me what is R1 by R2. Or you want me to solve? If you want me to solve, okay, I'll solve. 25 by 100 R1 plus 100 by 100 R2 equals 50 by 100 R1 plus 50 by 100 R2. ये वन था ना, मैंने 100 by 100 कर दिया, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा. 100 100 100 100 कैंसिल आउट. 25 R1 is 50 R2. R1 by R2 is 2:1. R1 by R2 is 2:1. So यहां से मुझे मिला, क्या मिला बेटा? R1 by R2 is 2:1. What I have, हिट एंड ट्रायल क्यों करना है? I mean, जो डेटा आपको गिवन है उस डेटा से पढ़ो ना. इसको सॉल्व करोगे तो R1 by R2 मिल जाएगा 2:1. हिट एंड ट्रायल जब करना पड़ा तो करते, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है ना बेटा. ट्रायल एंड एरर की जरूरत ही नहीं है ना. आपको जो डेटा गिवन है उस डेटा का मतलब यही निकल रहा है. उस डेटा का मतलब ये निकल रहा है R1 by R2 is 2/1. ओके, एंड R1 by R2 2/1 कैसे पॉसिबल है? चेक कर लो. इसमें इनमें से कोई एक R1 है, कोई एक R2 है, कोई एक R3 है, कोई एक R1 है, कोई एक R2 है, कोई एक R3 है. एंड R1 by R2 is 2/1. मतलब R1 कौन सा होगा? R1 नॉर्थ ईस्ट का होगा ना, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट अपॉन साउथ ईस्ट दिख रहा है 2:1, और कोई 2:1 दिख रहा नहीं है. मतलब R1 नॉर्थ ईस्ट होगा, R1 नॉर्थ ईस्ट होगा एंड R2 साउथ होगा. R2 साउथ होगा. R3 वेस्ट को डिनोट करेगा. R3 वेस्ट को डिनोट करेगा. R1 by R2 मिल गया आपको. R1 by R2 किस रेशियो में होना चाहिए? 2/1 के रेशियो में होना चाहिए. देख लो कौन सा 2:1 के रेशियो में है. ट्रायल एंड एरर की जरूरत नहीं है बेटा. इसलिए यहां पर ये एडिशनल डेटा गिवन था, उसका मतलब यही निकलता है जो हमने निकाला. ये एडिशनल डेटा गिवन था, उसका मतलब यही निकलता है जो हमने निकाला. चलो अब देखो व्हाट इज आस्क्ड. What is the number of surveyed kids were in G in W? Okay, G in W.
जी इन डब्ल्यू में ऑलरेडी पहले से 4200 प्लस 1050 है, 4200 प्लस 1050 है ऑलरेडी। कितने पहले से? 4200 प्लस 1050। ओ में से कितने बच्चे आए? डब्ल्यू में 50%। देखो डब्ल्यू में, जी में और 50% बच्चे ऐड हो गए, 50% बच्चे ऐड हो गए। ओके, तो डब्ल्यू का स्ट्रेंथ कितना था? 1500। 1500 का 50% जी में चला गया। ओके, सो 1500 का 50%, 1500 का 50% जी में और ऐड हो गया। Got it? So total strength now is total 50 to 50 plus 750, 6,000. Total strength after change is 6,000. 50 to 50 पहले से थे, 50% बच्चे और ऐड हो गए ओ में से। Okay, am I clear with this? Yes sir, you are clear with this. 4200 बच्चे and 1050 बच्चे पहले से थे, ये ओ वाले हैं जो ऐड हो गए। 50% of the students from O were enrolled in G, ये given है क्वेश्चन में। वेरी नाइस। लास्ट क्वेश्चन भी सेम डेटा पे बेस्ड है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द सर्वेड किड्स इन एस whose mothers had dropped out before completing primary education are in G now? So dropped out का आपको चेक करना है टेबल, dropped out, okay, and S in G आपको ये चेकआउट करना है। ड्रॉप्ड आउट में एस एरिया में जी में कितने बच्चे हैं आफ्टर द चेंज, ठीक है। तो ड्रॉप्ड आउट मतलब ये फर्स्ट वाला टेबल आपको चेकआउट करना है, एस में जी। सो 5100 ऑलरेडी है और बच्चे ऐड होंगे कहां से? अदर्स से। एस में अगर आप देखोगे तो 100% बच्चे दे हैड ट्रांसफर टू जी। एस में 100% बच्चे have transferred to G. So this entire O will be added in here after the change. क्योंकि S में 100% बच्चे are transferred to G. This entire 300 students will be transferred to G. बोलो yes sir. So now S has 5400 students. S has 5400 students after the change. S के पास कितने बच्चे हैं? S has 5400 students after the change out of total of 5700। टोटल है 5700 of 5700। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। फिर आफ्टर द चेंज 5400 बच्चे, और देखो 5100 यही ना, ड्रॉप आउट वाला टेबल तो यही है यार, ड्रॉप आउट वाला टेबल तो यही है। सो ये पहले और ड्रॉप आउट के बाद मतलब आफ्टर द चेंज ये 300 बच्चे भी ऐड हो जाएंगे इसमें। टोटल 5400 आउट ऑफ 5700। सॉल्व इट। 5400 आउट ऑफ 57। यूज कैलकुलेटर, आपको कैलकुलेटर एक्चुअल एग्जाम में मिलता है, ठीक है, आपको कैलकुलेटर एक्चुअल एग्जामिनेशन में मिलता है। फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी 5400 अपॉन 5700 क्रॉस 100। यूज कैलकुलेटर। When you will use calculator, you will figure out the value that is coming out to be is 94.7. Yes. And you are done with the question now. This was the question they asked in 2017, slot 1. A very good question. Not difficult one again. आप ध्यान दोगे, so it's not a difficult question. All you needed to do is to read out the question properly, and you had to have proper practice before. You had to have proper practice before. Without practice, you will find yourself nowhere, in the middle of chaos, in the middle of language, in the middle of values. So practice is very important. Okay, I have already mentioned that I'm starting a batch for logical reasoning in coming week. इसके टोटल इस वाले सीरीज के 15 सेशंस है। Before we are done with all 15 sessions, we are launching the LR batch. Maybe next week में तो for sure it would be launched on Wednesday, Thursday or Friday. 100%. Do join that particular batch. आपके friends को भी बोलो, जितने ज्यादा बच्चे आएंगे उतना ज्यादा commitment होगा। Ask them to join from, we are going to start from scratch
एंड विल कंप्लीट एवरीथिंग। फिर आप लोग एडवांस के क्वेश्चंस भी आप लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं। मीनवाइल होमवर्क फॉर टुमारो, दिस पर्टिकुलर सेट, check this out. I'll flash questions for 5 seconds. अटेम्प्ट करना खुद से अटेम्प्ट करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, पाउज कर लेना वीडियो, डू अटेम्प्ट इट। This is next question of this set. And this is the last question of this set. चलो हाँ, ऑल्सो एक मेरे तरफ से आप लोगों को गिफ्ट है। क्या गिफ्ट है? देखो मेरी तरफ से गिफ्ट है कि यस, चेक दिस आउट। द गिफ्ट इज कि सब्सक्राइब टू आइकनिक फॉर 1 year, prepare with Unacademy, and get assurance, CAT assurance. Assurance in what sense? If you are selected to any one of the IIMs, new हो, old हो, baby हो, किसी भी IIM में गए, the entire money will be refunded. Yes, Iconic is a premium course of Unacademy. If you purchase it and you will be enrolled to IIM, आप थोड़ा सा मेहनत करोगे ना, you will be enrolled to IIM for sure. If you get enrollment to IIM, the entire money will be refunded. Okay. If not, we will help you with another year of preparation. मतलब 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री में हमारी तरफ से, तो 50% डिस्काउंट वाली बात हो गई। ओके, तो या तो पैसा रिफंड, नहीं तो 1 साल का और एक्सटेंशन। व्हाट बेस्ट कुड बी, इससे बढ़िया क्या होगा? ठीक है। इसका कैसे करना है? यू रीच मी आउट पर्सनली ओवर टेलीग्राम, आई विल हेल्प यू आउट विद दिस। एंड ये लिमिटेड टाइम के लिए है, चेक आउट। दिस इज ओनली फॉर फर्स्ट 50 लर्नर्स, सबके लिए ये नहीं है, ओनली फॉर फर्स्ट 50 लर्नर्स। तो डू रीच मी आउट थ्रू माई टेलीग्राम चैनल क्विकली, आई विल हेल्प यू ये कैसे करना है। ओके, अगर आप डायरेक्टली रीच आउट करना चाहते हो तो टेलीग्राम पे सर्च करो @Ashish_ask10, Ashish_ask10, या फिर मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। चलो बच्चा पार्टी, having said that, we'll meet again tomorrow at the same time with the set that I gave as homework. Till then, tata, bye bye, see you tomorrow guys.